Welcome back. It's a brand new episode of WhatsApp University, झकास या बकवास. द यूजुअल सस्पेक्ट्स, मैं यानी कि रोहिणी और मेरे साथ ऑफ कोर्स सचिन कालबाग. हम दोनों मीडिया में काम करते हैं. अभी तो सचिन पॉलिसी में काम करते हैं, विच इज इवन बेटर देन वर्किंग इन द मीडिया. सचिन, पहले तो मुझे जानना है कि ये मीडिया की नौकरी मैं कब छोड़ पाऊंगी. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले एक साल में, जब से मैंने मीडिया छोड़ दिया है, मतलब एक्टिव मीडिया छोड़ दिया है, काफी लोगों ने मुझे पूछा और मैंने कहा जब आपके सेविंग्स ऐसे रहेंगी कि अगले 6 महीने तक आपको अगर कोई जॉब भी ना हो और आप अच्छी तरह से अपना समय गुजार सके, तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, चलिए. हम लोग बहुत सारे लोग हैं ना, वी लिव देयर in the newsroom because of the kick we get a high, so it's like a drug. It's the daily buzz. लेकिन of course इस daily buzz में सचिन of course has been a newsman, जिसकी वजह से उन पर कई सालों तक जिम्मा था टू चेक कि क्या न्यूज जो वो छापने वाले हैं अगले दिन वो सही है या गलत है. स्पेशली क्योंकि अगर गलत होता, द स्टेक्स वर वेरी हाई. यू वर printing this news, it was going to people, it would be gospel truth. But in the last, at least 5 years, news has completely changed in the way we consume it. Like for example, उस दिन मैं comedy show में गई थी and one of the comedians said कि फे ने बोला था. The Faye D'Souza, our dear Faye D'Souza, is literally her own channel now. She's launched her own app, and congratulations to her for that. But it's about credibility ultimately. कि लोग अब लोगों पर विश्वास करने लगे हैं. And it's kind of interesting that we do this podcast because at least with you and me, people would now, because we're more than 200 episodes in, I think, we've stopped counting at some point. हम ये करते आए हैं कुछ सालों से, जहां पर हम हर हफ्ते मिलकर आपको बताते हैं कि क्या ये न्यूज सच है या फेक है. एंड क्योंकि पिछले हफ्ते हमने चंद्रयान की बात की थी, and our episode was dedicated to the Chandrayaan and ISRO for making that spectacular moon landing. मुझे लगा कि क्यों ना आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम चंद्रयान से करें. What do you think, Sachin? Are we ready to go? Absolutely. We'll never get over this topic. We'll never get over Chandrayaan. Absolutely. All right. So this is going to be a little weird because आज के पहले सब्जेक्ट में हम सबको पता है कि India is the first country to have done a soft landing on the south side of the moon, and ये साउथ पोल है मून का. यहाँ पर किसी और देश से कभी भी किसी रोवर या स्पेसक्राफ्ट जो है लैंड नहीं किया है अब तक. एंड इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. सो द फर्स्ट थिंग इज, जब हम खुशी मना रहे थे, देयर वाज अ न्यूज दैट चाइना ने तो ये पहले ही कर दिया है. एंड आई वाज लाइक, व्हाट, हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज मुझे याद है बीबीसी ने भी कहा था, congratulations India, this is the first country to make a landing on the south side of the moon. So why is China claiming this, Sachin? पहले आप मुझे ये बताएं. चाइना ने 2019 में एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो लैंड किया था मून पे, लेकिन जो उन्होंने लैंड किया था वो वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द मून. जो देखिए, मून के रोटेशन के वजह से और अर्थ के रोटेशन की वजह से वो कोइंसिडेंस ये है कि हम पिंक फ्लॉयड का एक एल्बम भी था, द डार्क साइड ऑफ द मून. तो द डार्क साइड ऑफ द मून इज समथिंग दैट वी नेवर सी विजिबली, राइट? सो व्हाइल इट एग्जिस्ट, वहां पे क्या है हम यहाँ से देख नहीं सकते. तो चाइना ने जो 2018 में स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था और 2019 में जाके वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो पहुंचा मून पे, वो it reached on the far side of the moon. Okay, it reached on the moon side, which is not visible to us. So in that sense, it was a technological achievement. But that does not bring down India's technical and technological achievement, because south pole of the moon was even more difficult to get it right. So in that sense, I think हमारी जो उपलब्धि है, हमारा जो achievement है, that is as great as China's and America's, if not greater, because America in fact landed several missions with humans on the moon. So now they have created the एक और उन्होंने Artemis program mission launch किया था पिछले साल, जिसमें भारत भी एक सिग्नेटरी है. तो अभी उन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को चूज किया है जो मून के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, मून पर वापस जाने के लिए.
वो कब वो जाएंगे वो अभी तक फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन 2024 में कभी तो वो मिशन जो स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च होगा। तो आर्टेमिस मिशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, चाइनाज मिशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, इसरोस मिशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, एंड आई थिंक ऑल ऑफ दीज मिशंस आर लॉन्च्ड बाय ह्यूमन काइंड। सो हमें उसकी खुशी होनी चाहिए। बाद में हम लोग देखेंगे कि चीन ने कहाँ पर अपना लैंड किया, भारत ने कहाँ पर अपना लैंड किया। Just because China landed there in 2019 on the far side does not mean that ISRO's achievement is anything less. Very low. And just because ISRO landed on the South Pole does not mean that China's achievement is anything less. I think they're all equally difficult missions just to land on the moon. Fantastic. I just quick side chat, Sachin. जैसे ही हमने अपना पहला lunar mission complete किया, the news started coming about India's first solar mission. And in the beginning, I thought, what? Like, हम चांद पे तो हर कोई जा सकता है यार, चांद नरम है, चांद खूबसूरत है, चांद पर गुलजार साहब ने गाने लिखे हैं, लेकिन सूरज की बाहों में क्या हम नाच के जा सकते हैं? Is it true that ISRO's actually is it true that ISRO is planning to now go to the sun as well? Like, and yeah, is this fake? नहीं, देखिए हमारा एक मिशन जरूर है, आदित्य L1, जो आज 31 अगस्त, जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन ये रेडी होगा। और देखिए, जब कोई कहता है कि हम सन मिशन पे जा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम सन के ऊपर जाके लैंड करेंगे। It is practically impossible to land your spacecraft on the sun, where the temperature itself is hundreds and thousands of degrees, and at the core of course it is millions of degrees. So ये impossible है। लेकिन जो solar observatory है इसरो की, वो जरूर हम इसमें अचीव करेंगे। नासा के काफी सारे सोलर ऑब्जर्वेटरीज हैं, उसमें से सबसे पॉपुलर जो है, जो सबसे फेमस जो है, वो SDM नाम का उनका एक मिशन है, जहां पर उन्होंने इतना डीप रिसर्च किया है सन के ऊपर, मतलब क्लोज अप फोटोग्राफ्स, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सन, what exactly are sunspots. Each sunspot is actually bigger than the size of the earth in some of them. So ये जो इतना सारा जो रिसर्च है, वो अभी इसरो भी करेगा। तो ये उसका अल्टीमेट मिशन, ना कि वहां पर जाकर लैंड करना। Thank you so much for clarifying that, because I was just wondering, wow, it might be a little hot, अगर उनको वहां पर जाना है तो उनको शायद I would have given them a rumal or a hand fan to take along with them. All right, moving on. Speaking of ISRO, I must say that there is a friend of mine called Anish Bhasin, और उन्होंने एक रील लगाई थी. I was not able to find that reel right now for whatever reason, but उन्होंने उस रील में एक बहुत ही कमाल के यूट्यूबर को फॉलो करके ये जाना, जिनका नाम है गरीब साइंटिस्ट। सो गरीब साइंटिस्ट के चैनल पर आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पर उन्होंने कहा कि वी ऑल शेयर थिंग्स ऑफ इसरो ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम अ हैंडल कॉल्ड isro.in. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो है, जो आप और मैं मान रहे हैं इतने दिनों से, इट्स राइट हियर ऑन द स्क्रीन इफ यू गाइस कैन सी, दिस इज isro.in, एंड इफ यू गो टू isro.in यू विल सी के इनके 3.7 million followers हैं, right? Guess what? This is not ISRO's official handle. The other handle that people have been following is ISRO India Official. And this is, of course, 1.3 million followers. लेकिन ये भी ISRO का official handle नहीं है. ISRO का official handle is isro.gov.in _ and they have about 199,000 followers. So not in the millions for sure. But if you really want to know what... Oh, this is also not true. Wow, Sachin, this is why we did this show with you. Bataiye, do they even have an Instagram handle? They have. So this is the So this is the Instagram handle. So this is where we need to be very, very careful. Yes. Okay. देखिए, इसरो का जो इंस्टाग्राम हैंडल है और ट्विटर हैंडल है या x.com का हैंडल है, उसके अलग अलग नाम हैं। तो आप इस पे बहुत ही सावधानी से इसको फॉलो करें। देखिए, x.com यानी कि twitter.com का जो ऑफिशियल हैंडल है वो केवल इसरो है। Okay, so people will get extremely confused when they see isro.in, ISRO official, yes, on x.com, right? और Instagram पर
जो अभी आपके स्क्रीन पे एक्चुअली निखिल तनेजा आए थे, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोमो ही इज मेड जस्ट एज एन असाइड Be a ऑफ man. हिज न्यू शो, अमेजिंग। Yeah. आज सुबह ही उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा यू नो व्हाट एन अमेजिंग promo you've made. I'm sure the program is even better than Yeah. the promo. So that is a big quick plug for our Look friend for our friend. Nikhil Taneja. Okay, so आपने देखा होगा कि x.com पर इसरो का जो ऑफिशियल हैंडल है वो केवल @isro है, वो है. लेकिन उसके साइड में आपने ग्रे टिक मार्क देखा होगा, है ना? Yeah. So this gray tick mark means that it is a official government agency. Okay. So that. Then, Instagram. if you see just below the name of the, no, remain on that page. Remain on that page. Now, if you see just below the name Indian Space Research Organization, they've actually given the official Instagram handle also. Yes. Wow. Okay. Finally, ये रहस्य खुल गया thanks to Sachin Kalbag. Yes. ISRO.do. So, correct. Now, ISRO.dos, DOS stands for Department of Science. Okay, sorry, Department of Space. Now, ISRO.dos is the official Instagram handle. Now, if may I request you to go back to the x.com page again. उसके बगल में Facebook का भी है. So, you know, in one page, you can get all the official handles of ISRO. Okay. So, Facebook पे ISRO है, Instagram पर isro.dos है, और x.com यानी कि ट्विटर पर केवल ISRO है. So, you have to be very, very careful. अब ये ग्रे डॉट क्यों है, ग्रे टिक मार्क क्यों है? क्योंकि जब से हमारे करीबी दोस्त इलॉन मस्क जब से उन्होंने ट्विटर खरीदा, और अभी करीबन 2 महीने पहले उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर x.com कर दिया, तो उन्होंने काफी सारे महीने पहले, आपको याद होगा, पूरा जो ब्लू टिक मार्क हमारा निकाल दिया और कहने लगे अनलेस यू पे फॉर इट यू आर नॉट गोइंग टू गेट द ब्लू टिक मार्क, राइट? बट ही मेड 2 exceptions. One, he said that anybody who is part of the government, is an official agency, will automatically get verified, or is a government official like the prime minister or the president or some ministers or departments etc. will automatically get verified. तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हैंडल पर जाएं, तो वहां पे आपको दिखेगा कि उनका जो ऑफिशियल हैंडल है पीएमओ इंडिया, वहां पर एक गोल्डन टिक मार्क होगा. Yes. और जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं ऑफ एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वहां पर ये ग्रे टिक मार्क होता है. सो और ब्लू टिक मार्क उनको देते हैं जिनके पास आप जैसे, मेरे जैसे जो हम महीने के 900 रुपए देंगे टू रिटेन दैट blue tick mark and also get a bunch of new features. You can write a bigger post, you can edit your tweets, you can add bold, you can italicize, you can put pictures right in the middle of the text as if you're writing a blog. All of those features are there for people who are paying. लेकिन आप और मैं क्योंकि मीडिया में काम करते हैं, एटलीस्ट मैं, मेरी सैलरी उतनी है नहीं, तो मैं आई कांट अफोर्ड द $900. So I told our very dear friend Mr. Elon Musk, मैं तो आपको 900 रुपए नहीं दे सकता, आपके पास ऑलरेडी $200 बिलियन हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो कृपया आप उसी का ये 900 रुपए मैं आपको देकर आपका कुछ होने वाला नहीं है. So this is where we stand. So anyway, to come back to your question, आप अगर इसरो x.com पर इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल हैंडल पर जाएं, तो आपको वहां पर सारे ऑफिशियल हैंडल्स मिल जाएंगे. All right, Sachin. Sachin, मैं बहुत upset हूँ आपसे because here we are almost 10 minutes into our recording. It is the week of wishing me happy Onam. आपने अब तक मुझे ओणम आश्रम सकल नहीं कहा. I'm so sorry. I'm so sorry. Happy Onam to our loveliest RJ. Thank you. Yeah. Thank you. And my partner in crime. Yes, of course, of course. The reason why I'm talking about Onam, even though you're going to listen to this podcast a few days later, first of all, happy Onam and happy Raksha Bandhan. आप सबको, okay? रक्षा तो आपको, fake news से करना चाहिए. And Onam के उपलक्ष्य पर, of course, my mother, she's of course wonderful, but she's also the most effective fake news, like giver to me. I love it because वो मुझे भेजती है चीजें और फिर मुझे पता. Honestly, to be very honest, I didn't think much about this. मैंने कहा wow और मैंने हटा दिया साइड में. But let me share my screen.
इन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा बोलते हुए कि केरला के एक रेलवे स्टेशन पर, the entire railway station is beautifully decorated for Onam. Look at this beautiful train हम्म। and look at these wonderful flowers. कि पटरियों के आसपास फूल लगा दिए हैं और ये कसारा गोड त्रिवेंद्रम की ट्रेन है. So obviously it's been going around on Twitter saying this is a picture of a railway station in Kerala specially decorated for Onam. उसके ऊपर लिखा है, मजाल देखिए, the flowers near the tracks are real and have been planted specially for the occasion. Nice. Onam being celebrated from 20th August to 2nd of September. As I said, my mother sent this to me and I said, wow. Okay, but I didn't share it because that's the only difference. क्योंकि मैं share नहीं करती चीजें अभी. But later I found out this is fake. ये एक AI का ओणम वाला image है, obviously. And it's so embarrassing that I actually thought it's real. But लोग हाँ, ऐसे, ये बहुत ही एमेच्योरिश एआई है ना। आप हाँ, देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इतने उस बड़े बड़े साइज उनके के वो फूल. बड़े बड़े फ्लावर्स, उनके वो जो व्यक्ति गुजर रहे हैं उसके बगल में, वो कंप्लीटली ब्लर्ड हैं। जो वहां पे स्टेशन के वहां पर जो लोग खड़े हैं वो पूरे ब्लर्ड हैं। तो आपको ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए देखिए, कासरगोड, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम। एक तो वहां पर त्रिवेंद्रम अभी कोई लिखता है, मुझे पता नहीं, बिकॉज इट शुड बी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम. त्रिवेंद्रम इज nomenclature which ended I think 20 years ago. जी So हाँ. अभी वहां पे ऑफिशियल नेम तिरुवनंतपुरम है। वहां पे जो लोग हैं वो आपको ब्लर्ड दिखाई देंगे। क्लियरली those flowers have been pasted on Photoshop or AI or whatever the case may be. So this is clearly a fake. This is Oh my God. absolutely a fake. Absolutely a fake. Thank you so much, Sachin. मेरे ओणम को फेक मत बनाओ यार तुम लोग. सच्चे सच्चे मुझे अपने विश आप दे दो. आप आप बिलीव नहीं करोगे कि देखिए, ओणम, बैसाखी, दीज आर फेस्टिवल्स दैट आर पैन रिलीजन, राइट? इट्स नॉट, दे आर नॉट लाइक वन, स्पेशली इन अ सिंक्रेटिक कल्चर लाइक केरला, जहाँ पे हम सेक्युलरिज्म हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं, लेकिन केरला के जहन में ही सेक्युलरिज्म है ना। वहां पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस, और क्रिश्चियनिटी के काफी सारे डिनोमिनेशन, ऐसा नहीं कि केवल कैथलिक क्रिश्चियंस या सीरियन क्रिश्चियंस हैं या प्रोटेस्टेंट। वहां पे सारे, इतने सारे डिनोमिनेशंस हैं क्रिश्चियनिटी के, इस्लाम के, हिंदुओं के। तो सारे जो लोग हैं वहां पे एकदम, मतलब एक सिंक्रेटिक कल्चर जो है, अगर एक आइडियल हो तो वो केरला में। देखिए, झगड़े तो सारी जगह पे होते रहते हैं, लेकिन केरला में जो एक एक आप एक दूसरे के घर जाएंगे ना, तो आप ऐसे नहीं जाएंगे कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, आप जाएंगे क्योंकि आप एक फेलो केरलाइट। जी हाँ, I बिल्कुल. think that's a big difference. And I Beautiful. think when Onam is celebrated, it's not celebrated only by the Hindus. Muslims celebrate it, Christians celebrate it, all other kinds of religions in Kerala. These are the three main religions, of course, but all other religions, every single person who believes in celebrating good fortune, and essentially because Kerala was an agrarian economy, it still is to a large extent. वहां पर एग्रीकल्चर से जुड़े जो कृषि से जुड़े जो फेस्टिवल्स हैं, ओणम इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, टू मदर अर्थ, एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर दिस। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हालांकि ये शो फेक न्यूज के ऊपर है, लेकिन ओणम के नाम पर अगर आपने देखा होगा कि ये क्रिश्चियन है, ये क्यों सेलिब्रेट कर रहा है, या मुसलमान है, ये क्यों सेलिब्रेट कर रहा है, there is no reason to do that, because Onam is a festival that is Kerala. symbolizing of Kerala's syncretic culture. Beautiful. Thank you so much for that. Let's move on. अभी हमने एक फेस्टिवल की बात की, दूसरे फेस्टिवल की भी बात करनी चाहिए. And the second festival that I want to talk about is of course रक्षाबंधन. And you must know कि फेक न्यूज इतना स्मार्ट है, आपके और मेरे प्रोग्रामिंग से भी ज्यादा स्मार्ट है. बिकॉज अगर आपके पास फेक न्यूज आया और वो एक चीज पर फेक न्यूज हुआ, तो जाहिर सी बात है एक फेस्टिवल अगर उन्हें कवर किया तो दूसरा फेस्टिवल भी तो कवर होना चाहिए. सो द नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. अपेरेंटली रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर एक वीडियो वायरल हुआ है, और इस वीडियो के अनुसार, आई हैव सीन दिस वीडियो बिफोर एंड आई फाउंड इट वेरी फनी, जहां पर मेहंदी में आप क्यूआर कोड लगा सकते हैं.
और उस QR कोड को आप, क्योंकि रक्षाबंधन होता है फेस्टिवल टू गिव ईच अदर मनी, सो दिस इज गॉन रियली वायरल, सेइंग ये डिजिटल, दिस राखी आप लगाइए डिजिटल मेहंदी, ये है डिजिटल मेहंदी जिस पर आप QR कोड की मेहंदी बनाइए, स्कैन कीजिए और अपने भाई को बोलिए जब वो राखी बंधवा लेते हैं कि भाई मेरा ये हाथ स्कैन कर लो, और फिर इमीडिएटली वो पेटीएम से आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता है. Oh my God. And they said, oh, wow, it's modern technology, आज का टेक्नोलॉजी और हमारे एज ओल्ड ट्रेडिशंस का ये मिलाप, वाह वाह वाह. Is this even possible? इट इज पॉसिबल. अगर आप QR कोड देखिए, मेहंदी के रंग का अगर आप टैटू बनवा ले विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ QR कोड, इट इज टेक्निकली पॉसिबल. सी, QR कोड इज व्हाट essentially QR stands for quick response code, because you just scan it and you're taken directly to a payment system, a payment gateway where you can do. And it's not just about payment gateway, you can essentially take the viewer to any kind of website, any kind of digital destination. तो अगर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं तो क्यों ना आप किसी जी पे या भारत पे या पेटीएम पे जा सके. सो यू कैन एक्चुअली डू दैट. इट इज टेक्निकली पॉसिबल. लेकिन देखिए, हम इस जमाने में रह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को फोन तक नहीं करते. अगर किसी से बात करनी है तो टेक्स्ट करते हैं. किसी को पैसे भेजने हैं तो हम मिलते नहीं, हम ऐसे ही जीपे और वगैरह यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं. सो दैट्स अ बिट ऑफ अ सैड थिंग. आई थिंक इट कैन बी डन. इट इज नॉट दैट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. लेकिन आई एम अ बिट ऑफ अ ट्रेडिशनलिस्ट इन दिस सेंस. अगर आप इसको आप कंजर्वेटिज्म नहीं कह सकते, ये थोड़ा मैं ट्रेडिशनलिस्ट हूँ कि अगर आप अपने भाई बहन का साल में एक रक्षाबंधन है तो क्यों ना आप अपने भाई को या बहन को जाके मिले, instead of sending digital QR codes via Mehndi. Absolutely, absolutely. What a beautiful thing to say. And yes, as of right now, ये technology हिंदुस्तान में तो उपलब्ध नहीं है. Let's move on quickly. The other festival that we must talk about is, अगर आमिर खान की फिल्म आ रही हो तो जाहिर सी बात है आमिर खान के फैंस बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे. और ऐसी ही एक इमेज जो है, it showed up saying that this is the new poster of Amir Khan, okay? In a film that's called Lala Amarnath, and the hashtags are there. Rajkumar Hirani film बनाने वाले, बायोपिक है लाला अमरनाथ पर. And this actually went, it came to us saying that यार आमिर खान लाला अमरनाथ प्ले कर रहे हैं, let's talk about this. And then of course I looked at the image, and ये इमेज को देखकर मुझे याद आई एक फिल्म जो मैंने हाल ही में देखी थी, and that film was Oppenheimer. एंड येस, इट लुक्स लाइक एन ओपेनहाइमर इमेज. उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च कर पता चला कि ये एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को री इमेजिन किया है ओपेनहाइमर के कास्ट में. एंड इफ आमिर खान वाज टू बी कास्ट इन ओपेनहाइमर, ही वुड एक्चुअली प्ले Leslie Groves, जो कर्नल होते हैं वहां पर, he's going to play that role. And at wild.trans, that is of course the Instagram handle that put this out. So very sorry for you, Baba. You made some fantastic AI images, but people actually circulated this image. We will go back to our favorite word of the podcast, which is संदर्भ, which is obviously जब आप एक इमेज को कॉन्टेक्स्ट के बाहर ले जाते हैं तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो. आपने तो आमिर खान ने शूट भी नहीं की होगी, उन्होंने साइन भी नहीं किया होगा, आप तो सीधे अनाउंस कर दिए कि ये तो हो रहा है. सो एज योर इंस्टाग्राम पर काफी सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा. माय फेवरेट आर्टिस्ट, AI artist on Instagram is this guy called Sahil. Does some absolutely brilliant work using Midjourney and some other AI tools. और वो काम ऐसे करता है ना कि it looks very real, but he's very clear that they are all AI images. मतलब वो सामने लिख देता है कि this is Donald Trump imagined as a. So he's done a series of foreign celebrities, Donald Trump, Roger Federer, Lionel Messi, I think Matt Damon also, Leonardo DiCaprio. सारे लोग अगर वो ओणम सेलिब्रेट कर रहे हो तो कैसे दिखेंगे. And it's a brilliant series, but you know how people who love Donald Trump are, they'll say this is how Donald Trump celebrated Onam, but it's not true at all.
It's not true. We're out of time for this week's episode. We had a lot more stories, but अगले हफ्ते of course हम दोबारा से लौटेंगे. क्या आपके आटा में प्लास्टिक है? Is my tease for next week's episode, because we couldn't cover it this week. But we will come back with that, I promise you, because आटा तो आप अगले हफ्ते भी खाएंगे. So take care of yourselves, guys. I'm Rotalks on x.com या Instagram. Sachin Kalbag is Sachin Kalbag on x.com. And this is, of course, a podcast brought to you by HT Smartcast, giving you podcasts that make you smarter. I hope that, you'll come back for the next episode. And if you enjoyed this episode, please do write into us. We'd love to hear from you. Thank you, Sachin. Take care. See you next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.